अच्छा, तो आज शुरू करते हैं, डिस्कस करेंगे मॉक 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दिस इज़ ऑन डिफॉर्मेशन स्प्रिंग। और स्प्रिंग की जब हम बात करते हैं तो द फर्स्ट थिंग द एग्जामिनर वांट अस टू टेल इज दैट डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द रिजल्ट्स नीडेड टू प्लॉट एन एक्सटेंशन लोड ग्राफ। सो भाई एक ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है? एक ग्राफ that is extension versus load, extension in meters। तो बताओ क्या एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इसके लिए फॉलो करेंगे। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं, देखो हमें एक्सटेंशन चाहिए, हमें चाहिए लोड, ठीक है, और फिर हमें वेरिएबल लोड चाहिए ताकि हम डिफरेंट एक्सटेंशंस निकाल सकें। पर एक्सटेंशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग चाहिए होगी, अनस्ट्रेच्ड लेंथ चाहिए होगी। तो सबसे पहले आप मेंशन करोगे कि मेजर द लेंथ, measure the unstretched length of the spring। सबसे पहले काम ये करना है, unstretched length of the spring। ये बात आ गई। अब अनस्ट्रेच्ड लेंथ मेजर करने के बाद आपने क्या करना है, लोड अटैच करना है एंड यू कैलकुलेट द एक्सटेंशन देखिएगा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक्सटेंशन मेजर नहीं होगी। आपने ओरिजिनल लेंथ मेजर कर ली, आप न्यू लेंथ मेजर कर लो और फिर आप क्या करोगे, एक्सटेंशन कैलकुलेट करोगे। सो नाउ यू विल अटैच द लोड एंड measure the new length and calculate extension। ठीक है, measure the new length and calculate extension। अच्छा जी, उसके बाद ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपने ये लिखना है कि vary the load or use different loads, vary the load to obtain more values of extension, right? And then you may plot a graph। then उसके बाद आपको गिवन है in an experiment to obtain the results of extension load graph, spring is stretched beyond the limit of proportionality। spring is stretched beyond the limit of proportionality मतलब limit of proportionality क्रॉस करवा दी है। so on your graph mark and label with p limit of proportionality, एक बात। दूसरी बात ये है sketch the extension load graph for this spring। so it's been stretched beyond, इसका मतलब है आपने दो चीज़ें बतानी है, एक तो विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वाला पार्ट बनाना है ग्राफ का, दूसरा आपने when it's stretched, when it's loaded beyond the limit of proportionality वो बताना है। तो देखिएगा ये जो आपके पास पोर्शन है, यहाँ तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ओबे हो रहा था। जैसे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्रॉस हो जाएगा तो योर ग्राफ वुड बेंड टूवर्ड्स द एक्सटेंशन एक्सिस। वाई? क्योंकि पहले लेट्स से एक यूनिट आप लोड अप्लाई कर रहे थे, सो एक यूनिट एक्सटेंशन हो रही थी। नाउ अब वही एक यूनिट आप लोड अप्लाई करोगे तो अब आपके पास ज़्यादा एक्सटेंशन होगी, ठीक है, यू वुड हैव मोर एक्सटेंशन एंड दिस मस्ट बी एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ। सो आपने वही एक यूनिट लोड अप्लाई किया, पर यहाँ पर एक्सटेंशन देखिएगा आखिरी वाले में ज़्यादा एक्सटेंशन हो रही है। सो दैट्स वाई द ग्राफ विल बेंड टूवर्ड्स द एक्सटेंशन एक्सिस। देन लेबल द पॉइंट P। सो दिस इज़ द पॉइंट P विच इज़ द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो इसको आपने P लेबल कर दिया, ठीक है बच्चा। उसके बाद से कह रहे हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द स्प्रिंग अकर्स एट अ लोड ऑफ 8.5 न्यूटन। 8.5 न्यूटन पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है, तो उसने आपको लोड बता दिया किस लोड पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रीच हो जाएगा। नाउ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू दिस मच एंड द लोड इज़ 3.5 न्यूटन। तो 3.5 न्यूटन का अगर लोड देखोगे, इट इज़ द लोड दैट इज़ विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब 3.5 न्यूटन पे आपके पास 0.014 एक्सटेंशन है। फिर वो आपसे कहता है कि इफ़ द लोड इज़ 5.5 न्यूटन, लोड को हमने 5.5 न्यूटन कर दिया, तो अब बताओ एक्सटेंशन क्या होगी। तो अगर मैं 5.5 न्यूटन को कंपेयर करूँ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से, ये भी विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो प्रोपोर्शनलिटी में हम सिंपल रेशियो मेथड लगाएंगे कि भाई
3.5 न्यूटन पे कितना था बेटा 0.014 मीटर्स। उसके बाद 5.5 न्यूटन पे कितना हो जाएगा x, राइट। सो ये हो जाएगा आपके पास 3.5x इज इक्वल्स टू 0.014 इंटू 5.5, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0.014 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 3.5। इसको ज़रा कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट करोगे आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी तकरीबन 0.022 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन एक बात मैं यहाँ और बता देता हूँ, वो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है ना, वो रिकमेंडेड है, लेकिन फिर भी ताकि आपके पास इस कॉन्सेप्ट का एक रिवीजन हो जाए। देखो फोर्स जो है इट इज़ इक्वल्स टू के ई, ठीक है। फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन या लोड इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा F ओवर E। अब F कितना है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर F है 3.5 और E कितना है 0.014। तो यहाँ से मैं स्प्रिंग कांस्टेंट निकालूंगा। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालूंगा तो तकरीबन कैलकुलेट करें इसको, तो मेरे ख्याल में ये बन जाएगा समथिंग अराउंड 250 बनना चाहिए। 3.5 डिवाइडेड बाई 0.014, यस। सो 250 बन रहा है, 250 न्यूटन। फोर्स क्या है न्यूटन, ये क्या है मीटर्स में, सो 250 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, यहाँ से आपको क्या मिल गया बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट मिल गया। नाउ आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने क्यों 3.5 वाला लोड यूज़ किया, आपने 8.5 वाला क्यों यूज़ नहीं किया, आपने 5.5 वाला क्यों नहीं किया। बेटा इसलिए मैंने यूज़ किया कि 3.5 वाला एक तो विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, दूसरा उसके लिए एक्सटेंशन गिवन है, पर क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वेश्चन में मुझे इसके लिए एक्सटेंशन ढूंढने को बोला है उसने, इसके लिए एक्सटेंशन नहीं गिवन, ऐसे ही इसके लिए मुझे एक्सटेंशन नहीं गिवन, तो इसलिए मैंने ये वाला और ये वाला यूज़ किया। So now you have the spring constant, and what you needed to find? You needed to find the extension. So extension from this formula again would be what? Extension would be force over spring constant. So force on which you need to find this extension is what? 5.5. You have already worked out the spring constant, that's 250. So calculate करो बेटा, हाँ ये भी बन जाएगा 0.22 meters. So you see you are getting the same answer from both of these methods, but this is not recommended. This is not recommended over here because सीधे सीधे 2 मार्क का है, simple ratio method लगेगा, so you do not need to think much on this. Then there's this next question which says a child's toy consists of a flexible track and a model car. Flexible track and a model car. So figure 2.1 shows a diagram of the toy, and the child first holds the car stationary at point A. At point A the car is stationary, and then that point is 0.45 meters above the ground, above the horizontal section of the track BC and FG. So this is track BC and this is the track FG, ठीक है, BC and FG. Alright, now उसके बाद वो आपसे कह रहा है the child then releases the car which travels towards point B. Releases the car, goes towards point B, and उसके बाद यूँ जाएगा कार, ठीक है, goes towards point B. Both air resistance and friction between the car and the track are negligible. So इसका मतलब है no air resistance. Negligible का मतलब है no, right? या next to 0. Gravitational field strength यहाँ given है 10, but remember बेटा we have been told that this value is updated. This value you are not going to use 10 anymore. It's 9.8. So in the exam, if the examiner does some calculation using gravitational field strength and he has not given you any value for that, you are going to be using this only. Okay, so calculate the change in gravitational potential energy of the car as it travels from A to B. A से B जा रहा है, A से B जा रहा है, तो क्या करना है आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे बच्चा तो क्या होगा, अच्छा
जैसे ही नीचे आएगा ए से बी तक, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी? जी, मैं कह सकता हूँ। अच्छा, उसके अलावा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? mgh. सो आई ऑलरेडी नो द mass is what? 0.12. Mass is 0.12. Mass is 0.12. What is g? G in this case they have used 10, so I'm using 10. Otherwise you have to use 9.8. All right. उसके बाद क्या है? उसके बाद h given है आपको 0.45. All right. Let's calculate this. इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0.54 joules. So 0.54 joules. रिमेंबर मैं जूल्स पे फोकस कर रहा हूँ, यूनिट लिखना फ़र्ज़ है, यूनिट नहीं लिखोगे मार्क कट जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा जूल्स। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार व्हेन इट रीचेस बी. सो व्हेन इट रीचेस बी, एज आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो इसलिए आपके पास यही रिलेशन आप यूज़ करोगे. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², एंड इन दिस केस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू kinetic energy. Gravitational potential energy is equals to kinetic energy. So I can say that 0.54 joules, which was the gravitational potential energy here, that is equivalent to the kinetic energy, and that's half mv². So I'll just rearrange this. It will become 0.54 into 2 divided by m. What is m? 0.12. All right, and then this is v². So I'll just apply an under root on both sides. So square root, left side would be square root, and v² would become v. So you calculate this again, plug in the values in the calculator, and you will get your answer as 3.0 meters per second. All right. अच्छा जी, उसके बाद क्या है? After releasing it, the child expects the car to follow the track along A, B, C, D, E, F, G. So A, B, C, D, E, F, G. This is the track that the child expects the car to follow. Right? Now, it says that in fact the model car does not reach F. F किधर है बेटा? F यहाँ है. F ये वाला पॉइंट है, राइट? ये मॉडल कार यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा. मॉडल कार यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा. क्यों नहीं पहुँच पाएगा उसका अपने रीज़न बताना. अच्छा जी, सो देखिएगा एज द कार गोज डाउन, ठीक है, तो नीचे आने पर क्या होगा? नीचे आने पर अपनी कुछ एनर्जी लूज़ करेगा, एंड ऑल द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इट हैज़ एट दिस पॉइंट A would not be available here at this point D. ठीक है. So वो आपसे कह रहा है explain in terms of energy why the car does not go past D. Alright, why the car does not pass, which is also 0.45 meter above. So क्यों नहीं जाएगा भाई? इसलिए नहीं जाएगा कि the car does not have enough kinetic energy. The car does not have enough kinetic energy. अच्छा, एक तो प्रैक्टिकली लूज़ करेगा एनर्जी, दूसरा क्या है कि यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ से आगे जा ही नहीं सकता. मैक्सिमम ये होगा ना कि जितनी एनर्जी उसके पास वहाँ थी वो एनर्जी उसने कुछ लूज़ नहीं की, मैक्सिमम इस हाइट तक आ सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता. इससे ऊपर लेकर जाना है तो यू नीड टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा एनर्जी. ऑलराइट, सो मैं आपसे बात कर रहा था कि इट डज़ नॉट हैव इनफ एनर्जी टू गो बियॉन्ड डी, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी उसके पास जो थी 0.54 जूल्स थी. इफ़ यू वांट इट टू गो बियॉन्ड डी, तो फिर आपको और एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो इसके लिए रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या लिखेंगे इसके लिए? अंग्रेज़ी भाई आप लिखो इसके लिए कि द कार डज़ नॉट हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ट्रैवल बियॉन्ड डी, सो इट वुड रिटर्न. ठीक है, इट वुड कम बैक. 1 मार्क का है तो बस काफ़ी है इतना लिखना कि द कार डजंट हैव enough kinetic energy to go beyond D.
ठीक है। अच्छा जी, इट ट्रैवल्स, उसके बाद आपकी अगर हम डिस्कशन करें, इमीडिएटली आफ्टर बीइंग रिलीज एट ए द कार ट्रैवल्स बी टू सी एंड देन टू डी। ठीक है, इट्स बीन रिलीज, इट गो फ्रॉम बी टू सी एंड देन टू डी। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार एज इट रीचेस डी। सो वो जो बात मैंने ऊपर वाले के लिए बताई थी वही बात आप यहाँ लिखोगे। इट ट्रैवल्स बैक, इट ट्रैवल्स बैक, ट्रैवल्स बैक एंड रीच ए। ठीक है, रीच ए तक वापस पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी लॉस इस वक्त मैं कंसिडर कर रहा हूँ नहीं। ठीक है, तो जहाँ से रिलीज़ किया था वहीं पहुंच जाएगा वापस एग्जैक्टली। तो ये बात लिखना लाजमी है, एंड रीच ए। ओके, उसके बाद है द सोलर सिस्टम कंटेन्स सन, प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स। सो देखो यहाँ पर 5 चीज़ें हैं सोलर बॉडी, सोलर सिस्टम में या हमारे पास स्पेस में ये 5 चीज़ें अवेलेबल हैं। इसमें एक चीज़ ऐड कर लूँ, मून जो है ना ये आर्टिफिशियल, ये नेचुरल सैटेलाइट है। तो इसके अलावा एक और चीज़ होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये भी हमारे पास स्पेस में अवेलेबल है। तो SPMAC, SPMAC, ये 5 बॉडीज है जो हमारे पास स्पेस में अवेलेबल है। सो स्टेट द नेम ऑफ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। इसके लिए हमें बचपन में बताया गया था कि वी हैड अ वेरी नाइस मदर, वेरी एक्सेलेंट मदर। So my very excellent mother, my very excellent mother just served us noodles, just served us noodles, noodles. So देखो, my is Mercury, V is Venus, E is excellent, M is mother, J is just, S is served, S is Uranus, and N is noodles. So the name of the planet closest to the sun is what? It's Mercury. Describe the difference between planet and moon. So planet orbits the sun, planet orbits the sun or star, the sun or the star, and moon orbits the planet. ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। सो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का डिफरेंस बताना है। एस्टेरॉइड और कॉमेट्स के डिफरेंस की बात करेंगे तो एस्टेरॉइड क्या है? एस्टेरॉइड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स और मेड ऑफ मेटल। ठीक है, रॉकी ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू द सन, they have nearly circular orbit, right, and they have shorter period. While comets की बात करूँ, comets come from far away from the sun. ठीक है, और they are made of ice and methane gas, and then they have highly elliptical orbit. ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप 2 लिख लो। ये मैंने पहला, फिर दूसरा और ये तीसरा बता दिया। ठीक है बच्चा। The planet closest to the sun orbits the sun in 88 days. State 2 reasons why the earth takes longer to orbit the sun than this planet. So definitely सबसे most obvious reason क्या होगा कि the earth moves slowly. लाज़मी बात है, स्लो स्पीड होगी तो आपके पास ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप लिख लो कि the earth moves slowly or rather slower as compared to the other planet. Now what would be the other reason? The circumference of the orbit is larger, or you can say the radius of the orbit is larger. So circumference of the orbit is larger. ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद कह रहे हैं स्टेट द टाइम टेकन फॉर द लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम द सन टू अर्थ। सो बेटा या तो याद रखो 8 minutes या फिर याद रखो 500 seconds. This is the time that it takes from sun for the light to reach from sun to earth.
Using your answer to E, calculate the distance from sun to earth. Show your working. सिंपल फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. अच्छा देखो, स्पीड आपको लाइट की स्पीड अगेन याद रखनी है 3.0 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट, speed of light, and distance would be equals to speed is what? Speed is 3.0 into 10 to the power 8 meters per second multiplied by time is 500 seconds. So calculators please. ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस आपका बनेगा 1.5 10 पावर 11 मीटर्स. ठीक है, आपके कैलकुलेटर पे इसका आंसर आ रहा होगा वैसे d इज इक्वल्स टू 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, सो ये आंसर आ रहा होगा आपके कैलकुलेटर में, और आपने इसको लिखना है 1.5 10 पावर 11. रिमेंबर बेटा वन मोर थिंग दैट यू नीड टू पुट योर आंसर्स ऑन द स्पेसिंग गिवन फॉर आंसर. डू नॉट लीव देम जस्ट लाइक दिस, बिकॉज एग्जामिनर के पास पूरा हक है कि वो आपका यहाँ मार्क काट लें. वैसे काटने की ज़रूरत तो नहीं होती क्योंकि आपने आंसर निकाल लिए, पर उसके पास अथॉरिटी है, काट सकता है. ठीक है, सो उसके बाद आगे बात करेंगे. एक्सरेज आर ट्रांसवर्स वेव्स दैट आर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वेव्स. स्टेट द नेम ऑफ द स्पेक्ट्रम. जिस स्पेक्ट्रम में एक्सरेज हैं उस स्पेक्ट्रम का नाम बताइएगा. वही बचपन में इसका नाम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? आई होप नहीं होगा. उसके बाद कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय फ्रीक्वेंसी. तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स, या फिर मैं कह सकता हूँ इज़ द नंबर ऑफ वेव्स, या मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम. ठीक है, अच्छा जी. स्टेट द नेम ऑफ द वेव इन द स्पेक्ट्रम दैट हैव द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी. सो ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है भाई? अगर आप गामा रेस से चलते हो रेडियो वेव्स की तरफ तो आपके पास वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है यूँ जाते हुए, वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है, और फ्रीक्वेंसी यूँ जाते हुए डिक्रीज़ होती है. तो इसका मतलब है सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी गामा रेडिएशंस की है, गामा रेडिएशंस. ठीक है, अच्छा उसके बाद आपसे कह रहे हैं एक्स-रेज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ द ब्रोकन बोन. एक्सप्लेन हाउ दिस इज़ डन. सो इसके लिए बेटा देखिएगा, खुदा न खास्ता आपकी कोई हड्डी टूटी हुई हो और ये आपके पास दिस इज़ द बोन. अच्छा, इसके सराउंडिंग में क्या होता है? बोन के सराउंडिंग में फ्लैश होता है, गोश्त होता है. ठीक है, यस, ठीक है. सो this is the God forbid broken part of the body of the bone, suspectedly broken. We don't know which part is broken, but this is the suspected broken part. Now this is the x-ray source, x-ray source from where x-rays are coming straight like this. Now look here, there are portions and here is the screen, x-ray plate, x-ray plate. So what happens, this x-ray will pass, go undeviated, this x-ray will pass through undeviated, this will be stopped, then this x-ray would pass undeviated, then these would be stopped, then this would pass undeviated, this would pass undeviated. That means it would not change direction, undeviated, right? अच्छा जी, so the regions where x-ray would pass undeviated are these part of the x-ray plate would become white, right? This part will become white, this part will become white. So that means these are the regions where there is the flesh. यहाँ पर टूटा हुआ है ना, तो सिर्फ फ्लैश से पास हो रहा है. फिर क्या है? फ्लैश. दैट मीन्स एक्सरे कैन पेनिट्रेट थ्रू फ्लैश easily, they can go past by flesh, but these regions, the whiter regions, or I might shade them as gray,
These are regions where X-rays are absorbed or they are less penetrating. So these regions X-rays are absorbed. Right, X-rays are over here. So these are the regions where X-rays are absorbed. So these regions would look white as compared to the other regions where the flesh is present. That's how the X-ray image is formed. So what you can write as an answer to this is okay. So there are regions where X-rays pass through easily. There are regions where X-ray would not pass through. The regions where X-ray pass through are the regions of flesh, and the regions where X-ray are absorbed, they are the bones. So you would see them as bright regions, and that's how you can identify where a bone is broken. So what you would write for this, the statement that you would give for this would be that X-rays directed towards the X-rays are to be directed right. Alright, so okay, आप इसके लिए लिखोगे X-rays are directed towards part of the body where the bone is suspectedly broken, where the bone is suspectedly broken. ठीक है, उसके बाद पहला मार्क, उसके बाद दूसरा मार्क किस चीज़ के लिए मिलेगा? एक्सरेज पास थ्रू द फ्लैश, एक्सरेज पास थ्रू द फ्लैश, या आपने डायग्राम पर शो की हो तो भी मार्क मिल जाएगा. पास थ्रू द फ्लैश, pass through the flesh but not through the bone, right? 2 marks. Lastly, आप कहोगे image is produced by digital detectors. Image is produced by digital detector. ठीक है. Explain why X-rays are not used in prenatal scanning. So yes, definitely they cannot be used in prenatal scanning because the main purpose of the X-ray is to scan bones. X-rays show the bone structure rather than the fetal development. It cannot differentiate between softer tissues. So X-rays can show the bone structure, but not the fetal development. Right? And secondly, X-rays may cause cancer, it may cause mutation, birth defect, or miscarriage. Mutation, birth defect, and miscarriage, and so on. Right?
So the next question is, figure 5.1 shows a diagram that has number of particles, charged ions, beryllium. The charge on an electron is this much, the charge on the ion is this much. Now this figure already show you a structure of atom ion, and that ion has 2 electrons already available, but it says it's an ion, so it has a charge of +2. That means apart from these two, the original atom would have had more than these 2 electrons, right? So that means if I need to deduce the charge on the ion, the number of protons in the nucleus, show your working. So I need to find the charge on the ion. Now the charge on the ion would be, from the charge on the ion I need to tell the number of protons. So this is the total charge. The basic fundamental charge is this much. So 3.2 divided by 1.6, since the powers are same, so I am not necessarily need to write them. 10 to the power minus 19. Alright, so 1.6 into 2. So that means it has lost 2 electrons. It has lost 2 electrons. Now it has lost 2 electrons and it has already available 2 electrons. And if I talk about a neutral atom, the number of protons should be equivalent to the number of electrons. So 2 electrons lost, 2 are already present, so that means in total in this neutral atom there would have been 4 electrons. So that means the number of protons would be 2 plus 2, that is 4, right? 2 plus 2, that is 4. The figure given to you already right now is consisting of 2 electrons, and it is an ion. It has lost electrons. So the number of electrons that it has lost, I have found it by dividing the total charge by the fundamental charge, the basic charge. What is the total charge? 3.2. What is the basic charge? Minus 1.6. So when I do that, I get the answer 2. That means this has lost 2 electrons. These 2 electrons are lost. 2 electrons are already shown in the figure. So that means in total this neutral atom would have had 4 electrons, and 4 electrons means it would have had 4 neutrons as well, right? 4 protons, sorry. So write down the nuclear notation of the symbol. Now Be, this is the symbol, and it has how many? 4 protons. Alright, but let's talk about the nucleon number. If you look at this, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 particles, out of which 4 are protons and 5 are neutrons. Isotope in figure 5.1 is the only stable isotope of beryllium. Explain the term isotope. So isotopes are atoms of the same element. What are isotopes? They are atoms of the same element with same proton number but a different neutron number, right? So atom of same element. Isotope are atoms of same element with same proton number but different neutron number, right? Then you need to explain what prevents electrons in an atom from escaping. So electron being escaped from an atom, how do we prevent that? To escape an electron from atom, you see there are electrostatic forces of attraction. Electrostatic forces of attraction between positive nucleus and negative electron. Between positive and negative electron holds the electrons inside the atom. Right. उसके बाद अगली चीज़ क्या है? An electromagnet is used to separate objects that are magnetic from objects that are non-magnetic. Figure 6.1 shows electromagnet suspended from the arm of a crane. State the name of the metal from which the core of the magnet is made. So that's iron. Iron is used because it is a soft magnetic material. It can be easily magnetized. It can easily be demagnetized. Then the question says the electromagnet is powered by a 220 volts DC supply. 220 volts DC supply.
direct current. The electromagnet is switched on and the current in the circuit is 39 amperes. Calculate the power transferred to the electromagnet. So what is power? Power is current into voltage. Power is current into voltage. 220 is the voltage, 39 is the current. So please, calculators. Alright, so it should be 8.6 10 to the power 3 watts. You can also write it 8.6 kilowatts, because 10 power 3 means what? Kilo. So 8.6 into 10 to the power 3 watts. Right, remember again, you need to answer on this line. Examiner has all the right to deduct your marks. So the DC supply is a set of batteries. Battery power the magnet for 4.5 hours before they need to be replaced. Calculate the charge driven along the complete circuit in this time. So you need to find the charge. What is charge? Charge is current into time, right? So the time is 4.5 hours. Remember, you need to convert this into seconds. So hours is 1 hour is 3600 seconds. So 4.5 multiplied by 3600. And what is the current? It's 39 into 4.5 into 3600. You might be asking, sir 39 current कहाँ से आया? तो बेटा यहाँ से आया, ठीक है? So you again calculators, when you do that, alright, so it should be 6.35. Charge is equals to 6.35 into 10 to the power 5 coulombs. Alright, 6.35 into 10 to the power 5 coulombs. Then it says, on a very cold morning, when the electromagnet is first switched on, the current is greater than 39 amperes before decreasing to the usual value. Explain why the current is initially greater than 39. So on a cold morning, electromagnet is first switched on. Current is greater than 39 amperes before decreasing to the usual value. So basically, resistance increases with the temperature. As it starts heating up, the current would drop, and then when a certain temperature is maintained, so the current would remain to a constant value. So this 39 amperes is the working current when the heater is switched on. So definitely, if the heater is not switched on, that means the temperature is lower, so the resistance would be lesser, so initially the current would be more. Hence you can write resistance is increased, or resistance is more when temperature is high. So current would be lower, and that is 39 amperes would be lower, 39 amperes when heater is working. When electromagnet is switched on. Alright, okay. उसके बाद this is the next question. It says 7.1 shows. Alright. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, miss. Welcome, miss. Alright, so ये हो गया. उसके बाद figure 7.1 shows a child sitting on a sledge on a snow-covered hill of constant slope. The time t is equals to 0. At time t is equals to 0, the child and the sledge begin to move down the hill in a straight line. When the child sees a wall ahead, he applies the brake. The child and the sledge continues to travel in a straight line until they come to a stop before hitting the wall. Now, figure 7.2 is the speed time graph for the journey. The brake is applied at t is equals to 26 seconds. Figure 7.2 shows how the speed of the child and the sledge varies over the whole journey. Explain why between t equals 0 and t is equals to 26 seconds the speed varies the way it's shown by the graph. So देखो ग्राफ में क्या नज़र आ रहा है.
आपने ग्राफ को डिस्क्राइब करना है। ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है इनिशियली द स्पीड इज इंक्रीजिंग, द स्पीड इज इंक्रीजिंग 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 एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट। ऑलराइट, सो एक चीज़ तो आपने क्या देखी, इंक्रीजिंग स्पीड। एक और चीज़ वो क्या है, वो आपको नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है भाई, जिस रेट से स्पीड बढ़ रहा है वो रेट डिक्रीज़ हो रहा है ना, मतलब स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है एंड स्लोप इवेंचुअली ज़ीरो हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ? इट्स एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन। सो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्रॉप हो रही है, एक्सेलरेशन ड्रॉप हो रही है, एक्सेलरेशन इवेंचुअली ज़ीरो हो जाएगी। ऑलराइट, फिर एक्सेलरेशन किस के ऊपर डिपेंडेंट है? फोर्स के ऊपर। कौन से फोर्स के ऊपर? रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स भी ज़ीरो हो रहा है ना। तो माय गॉड, द स्क्रीन इज गॉन अगेन। Alright, it's there. So eventually